Yes, Mona? गुड इवनिंग सर। कल का एक आर्टिकल है राजा रमन्ना का इंटरनेशनल रिलेशन पे, वहां स्टार्ट करते हैं। तो यस सर। इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा सर स्ट्रॉन्ग इट्स करते हैं। एक्सटेंडिंग सो मच सर। या आई नो क्या है ना, अब क्या है, अब ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग बहुत हार्ड कर रहे हैं ना। हम लोग बीच में कुछ ब्रेक भी कर सकते हैं भावना, हाँ वी कैन ब्रेक ऑल्सो, क्योंकि अब आपका जा रहा है अप्रैल के बाद, ठीक है ना, अभी फरवरी है। तो जैसे हम अभी हम 6-7 हम वीक में 6-7 डेज कर रहे हैं ना, सो 3-4 डेज भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ओके, थोड़ा क्या तुमको भी रिलीफ मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन द ऑफिस बिकॉज यू नीड अगेन द लीव। यस सर, सो दैट विल नॉट बी राइट आल्सो हाँ हाँ, टेकिंग इट फॉर सो मेनी क्या डेज। थोड़ा सा ऑफिस में लाइट काम करो, जैसे मैं ऑफिस में पढ़ लेता हूँ ऐसे पढ़ने की कोशिश करो। हालांकि रेलवे की नौकरी थोड़ा टफ है, हम लोग नौकरी आपकी तुलना में थोड़ा आसान होती है, बट यू कैन ज्वाइन। और हम लोग क्या है कि रोज के बजाय उसको 3 दिन 4 दिन कर लेते हैं फॉर सम टाइम। व्हेन यू विल गेट योर डेट देन अगेन यू विल कम बैक एंड स्टार्ट इट। ये यस सर। ऑल्सो बिकॉज अगर आपका ये इंटरव्यू जाके अप्रैल मई में पड़ रहा है तो बहुत काफी दिन है ना जो। यस सर। डेट कब तक आ गई? 9 अप्रैल तक की डेट आ गई ना? सर 21 अप्रैल तक। हाँ, तो आपका उसके बाद पड़ रहा है, हाँ। तो ये 25 अप्रैल में मोर देन 2 मंथ्स है। यस सर। ये जो राजा रमन्ना का आर्टिकल है कल का, उसको खोलो। एज एशिया आर्म्स यूरोप। आकाश, पढ़ा है आपने इसको? यस सर, आई हैव। जस्ट सी, यही शुरू करते हैं आज। सर सो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू होम टुमारो सर। ओके ओके, यू कैन गो। तो एक दो दिन हम लोग क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है? एक दो दिन आप घर जाओ, यस सर। मम्मी मम्मी से मिल लो, अभी आप क्या बहुत दिन से हो, इट्स बेटर। एक दिन बंद कर लेंगे, जब आपको लगेगा कि हम कर सकते हैं हम लोग फिर स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग आई काफी हैड सर, मुझे लीव एक्चुअली March 15 तक मिला है, तो फिर लीव। मैंने। यस सर। So what do you want? You want to curtail the leave and join, then again take यस leave? सर, आई विल It's good idea. curtail it and I will join. Yeah. You discuss with Iti, she will guide more about your leave issue. But I think it's better you join it, and then you again, when your interview is going to come, again you take the leave of 15, 20, 25 days. It's better idea. Because क्या Yes sir. ट्रैक आपके पास आ गया है। अच्छा, उस ट्रैक से क्या आप समझ लो कैसे करना है, तो ऑफिस टाइम में शाम को कर सकते हैं, हम लोग हफ्ते में 3-4 दिन कर देते हैं, तो ये आपको Yes sir. सूट है। ठीक है, ठीक ठीक है। Sir, this article mainly focuses on the defense engagements and the increasing contribution of Asian countries like South Korea, Japan, and China also to the defense manufacturing and defense exports. You can also extend this the rising power of the new nations. Yes sir. Why only confining the defense? Although Raja Mohan has written for the defense engagement, but you can extend it with the rise of the new powers. Got it? This is Yes sir. I'm now try to elaborate a bit. Sir, in fact, he has spoken about how South Korea and Japan, they are acting like anchors of bringing in NATO in the Asian region. Then he focuses on the European and the Asian security, how they are deeply interconnected, and how Asian powers also would, in fact, give arms or give weapons for strengthening the European defense. And there are many other countries in Europe, like Poland, who are, in fact, Norway, Estonia, who are looking up to importing arms and defense ammunition from South Korea. And recently, he has also spoken about the changes in the Japanese defense policy. Earlier, they had focused on a more pacifist policy, but after the recent Ukraine-Russia war, it has started rethinking and analyzing its security policies, and it's bringing in a national overhaul. It is also bringing in, it's in fact trying to provide a non-lethal military assistance to Ukraine also. And they have in fact increased their defense allocation in their budget. So it plans to spend, and perhaps in the next 5 years, it will double. So we are seeing the rise of or more militarization in Asia.
Why you are not explaining the role of India? Sir, I was coming to indigenization, sir. I just left out that part. Sir, role of India also. We have had many agreements with US on joint defense production and defense technology transfer initiatives also. We have also shipped our BrahMos missile, and we have had agreements with the countries like Philippines and Vietnam. Other than that, we are also looking for increasing. Sir, we are increasing even our arms exports to the US. So it's not only for the developing world, but also for developed countries like US. And even HAL is also having contracts with Malaysia for Tejas fighters. And in both places, the fighter and the trainer aircraft, we lost out to the Korean aircraft, which won the competition. But we are still trying to export the Tejas aircrafts, which are done by HAL. The most important line is the largest destination for Indian armed force is not the developing world but the US. It is Yes, a very interesting line which is written. ये जो इंडियन की जो इंडिया जो असेंबली कर रहा सब असेंबली कर रहा है वेपन सिस्टम को, ये इंडिया के साथ काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा क्या है, जापान का पास जो एक सिक्योरिटी सिस्टम था उसके हट कर जापान एक नए तरह से हमारे सामने आ रहा है। और जो एशिया में, देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि एशिया एक नए तरीके से उभर रहा है, एशिया में भी नाटो आ रहा है कल से। ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो नाटो एक्सपेंशन है, या आप कह सकते हैं कि जो नाटो का जो अलायंस है एशिया या एशिया की जो एक मिलिट्री पावर बढ़ रही है, तो जो एक नाटो की मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वह एशिया में एक्सपेंड हो रही है। शायद आप ये भी कह सकते हो। यू एग्री माय पॉइंट? यस सर। तो इन्होंने जो यूक्रेन रशिया का जो आर्म्स जो एम्यूनिशन का जो रेस स्टार्ट हुआ है, दूसरा उन्होंने क्या बोला है, जो हमारा पाकिस्तान है, जो हमारा वेस्टर्न नेबर है, या यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई करने का सेंटर हो रहा है। तो जो एशियन रीजन है, वह एशियन रीजन जो पूरी की पूरी है, वह एक डिफेंस एंगेजमेंट में सामने आ रहा है। और कोरिया की सबसे ज्यादा तारीफ की गई है कि कोरिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वह नियरली कितना है, $20 बिलियन लास्ट ईयर हुआ है। $20 बिलियन लास्ट हुआ है, सॉरी $20 बिलियन उन्होंने लास्ट ईयर का आर्म एक्सपोर्ट किया है, वो 8th है। अब जरा समराइज करो इसको, लेट्स आकाश जरा समराइज करो इसको। आकाश, यस सर। अब जरा समराइज करो इसको। Sir, due to Russia-Ukraine war, the defense allocation in European countries as well as in Asian countries increased, and in particularly Asia, South Korea and Japan as well as China emerged as a defense producing power. And sir, there is also a scope for India to export BrahMos missiles and Tejas aircrafts to the developing countries as well as to developed countries. एक चीज देखो और मिस हुआ है, ना, जो चाइना है वो सब ज्यादा हल्ला कर रहा है। चाइना इज शाउटिंग अ लॉट अबाउट इंडिया ज्वाइनिंग एन एशियन नाटो, and how he is trying to interpret this aspect that South Korea and Japan, they are bringing NATO into the Asia and also taking Asia to NATO's front line with Russia. तो एशिया, जापान, इंडिया, इन तीनों पर उसका एलिगेशन है कि वह नाटो को जो एक्चुअल नाटो है उसको रशिया के फ्रंट लाइन में ले आ रहा है। जस्ट ट्राई टू इंटरप्रेट दिस। आकाश, ट्राई इंटरप्रेट दिस फर्स्ट, देन द भावना।
Sorry, sir, I didn't understand the question. देखो चाइना इस बात का सबसे ज्यादा हल्ला कर रहा है. चाइना इज शाउटिंग अ लॉट दैट इंडिया ज्वाइनिंग एन एशियन नाटो. Yes, sir. सेकेंड, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं चाइना के, साउथ कोरिया एंड जापान, are not only bringing NATO into Asia but also taking Asia to NATO's front line with Russia. So what he wants to say कि India, Japan, South Korea, they are trying to come together to form a new NATO here. Clear? Yes, sir. Yes, बोलो इसको. बताओ. Sir, sir, that the India, Japan, and South Korea is basically increasing their capacity building to protect their national interest and sovereignty. So the claim of China is not completely legible because the wolf warrior diplomacy of China and the aggressiveness. Why you are using that diplomacy? Unnecessary सवाल और आप क्यों दे रहे हो कि वुल्फ डिप्लोमेसी सवाल किया जाए? आप मत दो सवाल ऐसा, ठीक है ना? देखो हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ है. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सिंप्लिसिटी है और बात को सीधे कहने की क्षमता है. उसी में आप आओ. भावना भावना की स्ट्रेंथ क्या है? वो चीजों को डिलीवरेट कर लेती है. तो आपकी स्ट्रेटजी भावना पे नहीं लगेगी और भावना की आप पे नहीं लगेगी. तो लेट अस डिजाइन द स्ट्रेटजी फॉर टू एस्पायरेंट्स द सेपरेट वे. तो आप बेटा स्ट्रेट रहो, सिंपल रहो, आपका काम हो जाएगा. ठीक है ना? कब? Yes, sir. Sir, due to the national interest of India, we are engaging with different groups so we can afford our sovereignty. And due to the aggressive policy of the China and Russia, Japan and South Korea is focusing on increasing their defense expenditure so they can become much more resilient with regarding to safeguarding their national interests. भावना बताओ. भावना? Yes, sir. Sir, China is trying to be the global power, and so it's weary of entrance of NATO in its close neighbors, especially when are in fact bringing NATO to the Asian region. ये बताओ, is there is a NATO in the Asian region? Let's try to interpret this more. Is there a NATO in the Asian region? No. No, sir. Is the opinion of the writer. Don't be carried away. There is no NATO. Yes, sir. If you see the last para, India's recent agreement with the US on expanding joint defense production and technology should be a precursor to a wider range of agreements with its European and Asian partners to transform India's defense production and enhance its arms exports. But sir, we should only say this. Every country has the right for its own self-interest, to have own defense mechanism, to have own defense production power, having the collaboration with other countries. It's the right of India. Every country has. We are not going to any military alliance. Not only the military alliance, which has been. But it's a wrong interpretation. And this interpretation is only propagated by the China. I wanted to read this article today only because to dispel this fact from your mind that by any mistake you should not say that there is a NATO in the Asia. There's no NATO in the Asia. China is unnecessary making. Why the Taiwan, Korea? Why? अब China की जिससे नहीं पड़ती है. China is trying to make villain of it. अब चाइना का ताइवान से प्रॉब्लम है, चाइना का कोरिया से प्रॉब्लम है, चाइना का इंडिया से प्रॉब्लम है, चाइना का जापान से प्रॉब्लम है. So does it mean if India is making any arrangement or agreement with the European power or American powers for its own interest, for its own defense equipment system, does it mean it's NATO? No. Has India made any alliance? No.
क्लियर हुआ? लेकिन ये Yes, आप sir. बात आप तभी कह पाओगे जब इसको आप समझोगे, जब इसको समझ जाओगे तभी कह पाओगे कि एक देखिए एक रीअलाइनमेंट हो रहा है। भारत को भी पैसा चाहिए, हमको पैसा कमाना है। The world has been changed to the new system of the trade and commerce. हमको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है। तो हमको अगर डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक ऐसा फील्ड है जहां पे अगर हम खुद अपना सामान बनाएंगे तो फॉरेन करेंसी बचेगी, और अगर बेचेंगे तो फॉरेन करेंसी आगे आएगी। दैट्स व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द हेड्स। अब इंडिया क्या कर रही है, उन देशों से समझौता कर रही है। कंट्रीज हु आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, एवरी कंट्री इज डूइंग। तो इफ देयर इज सिचुएशन दैट देयर इज नॉट, ऐसा कोई नॉट नहीं है सर, ये अपना अपना ये हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट कर रहे हैं। कोरिया भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। एंड देयर इज नो मिलिट्री अलायंस इन एशिया। आई थिंक इट विल बी योर कंक्लूडिंग रिमार्क। Yes, बताओ, sir. कोई Sir, डाउट है इसमें? sir, not on this, but on Quad. यस, ये क्वाड तो एकदम अलग Because है। क्वाड because तो because China and Russia are most probably are trying to portray that Quad is like similar to Asian NATO, whereas it is not. It is just a grouping of like-minded democracy यस for यस, economic, political, and security उसमें in Asia. उसमें आप ध्यान दो So क्या है उसमें, पर्सनल satisfaction, personal relation, trust are important. There is no military issue in that. Just read a quad a bit. Just read a quad a bit, you will get the answer. yes, sir. हाँ, नेक्स्ट बताओ क्या पढ़े। आज शुरू करते हैं आज का जो पेपर है। हम लोग क्या भावना, एक एक करके हम कल के पेपर के कई आदमी पढ़ेंगे, ठीक है ना? हेलो, आज का हाँ भावना, आवाज चली गई आपकी, आप एग्जिट करके इन कर जाओ फिर से। there was
क्या भावना? Sir, हाँ in yesterday paper, हाँ. there was an so that will be useful for Akash. I Yesterday, think. which paper? Express or Hindu? In 18 हाँ on the end page, the last part. Explain नहीं? page, sir. Page number हाँ 18. यस यस. क्या था? आसाम चाइल्ड मैरिज. This there is nothing much to discuss, but millets, sir, millets. हाँ यस यस. नहीं ठीक है ये अच्छा. इसमें कई पॉइंट अच्छे लिखे उन्होंने. दिस भावना, आवाज आ रही है बेटा? भावना आवाज आ रही है? भावना, आकाश आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Hello. हेलो. ये घोड़ा ठीक हुआ? Yes, sir. हाँ देखो मिलियन का Sir, जो am I audible? हाँ या ऐसा करो भावना, अपना वो ऑफ कर दो. कहते हैं वीडियो. यू ओनली वर्क फ्रॉम द ऑडियो. देखो बेहतर हो जाएगा. जस्ट डू दिस. बेहतर हुआ? आवाज आ रही है? आप बोलो. आप जस्ट Yes, sir. हाँ यस. आप वीडियो ऑफ Yes, कर दो. sir. वीडियो ऑफ कर दो, ऑडियो से काम हो जाएगा.
वो भावना क्या है, जो मिलेट का इशू है उसमें दो Yes, पार्ट sir. है. Just see 2-3 points before I'm taking your opinion. मिलेट का दो पार्ट है. एक पार्ट क्या है कि मिलेट के लिए क्या क्या किया जा रहा है, किया जाना चाहिए. दूसरा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स. तो चाहे बेनिफिट ऑफ Yes, मिलेट्स लिख लो. sir. पॉइंट 1 इको फ्रेंडली, आप ऐसे लिख दिया. पॉइंट 1 इको फ्रेंडली. सेकेंड, much less water required comparison to rice wheat. Third, can be grown rain-fed areas. Next, more tolerant to drought and extreme weather. Next, healthier option to keep lifestyle disease away, especially the obesity and diabetes. Next, much lower glycemic index. जो आपका ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है वो आपके कहते हैं डायबिटीज को प्रभावित करता है. मोर फाइबर will decrease anemia, contain niacin जो लोअर करता है ट्राइग्लिसराइड को और इंक्रीज करता है एचडीएल को और गुड कोलेस्ट्रॉल को. और इसको पॉलिश में किया जाए तो बेहतर है. ये आपका क्या हो गया, इट इज योर एडवांटेज विद द मिलेट्स. नाउ क्या है, मिलेट्स पे सवाल होने के चांसेस क्यों है, क्योंकि ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर हुआ है. So one of the question which you may address that why millets are needed. So first you see this. Now come on the next part. What action has been done for having the more millet? Just tell me this. Come. Sir, in fact, India was the one who had brought up the millets at UN General Assembly also. And because of India's push, the year 2023 is designated as the year of millets. And we have also tried bringing in the budget Shri Anna, wherein the Indian Institute of Millet Research at Hyderabad is said as Center of Excellence for undergoing research in millets. And also there has been inclusion of millets in the food menu of schools. And State of Karnataka is including it in the midday meal scheme. Sir, they have also, the All India Institute of Medical Sciences is thinking of setting up a millets canteen for exclusively to serve millet-based foods. Other than this, there are many organized millet fairs, exhibitions, and awareness about millets is being increased by the government. Two more things you can add, Bhavna. One, in the minimum support price crop list. If you remember last time we have discussed this, and the Chief Minister of the Chhattisgarh has also said this, that Chhattisgarh has already considered this in the list of the MSP. Second, it may be added in the public distribution program. जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है वह कुछ ही क्रॉप तक सीमित है. इट नीड टू बी मोर डाइवर्स. तो यू कैन आर्ग्यू दिस वे कि नाउ आवर सोशल प्रोग्राम रिलेटेड विद द फूड not only concerned with the hunger, but it may have the concern with the nutrition also. Therefore you can add these two things. I think your answer will be complete. सर बताओ आप कुछ. जी फाइन सर, आई थिंक दैट सम्स अप एवरीथिंग. मिलेट प्रोड्यूसिंग जो थोड़े बहुत स्टेट्स हैं हल्का सा मालूम होना चाहिए. यस यस यस. टॉप 3 जान लीजिए, दैट्स ऑल. यस यस. थोड़ा मिलेट के लिए कौन सी जमीन चाहिए, कौन सी क्रॉप चाहिए, कौन सी सॉइल चाहिए, ये सर ने बताया कि कहाँ पे मिलेट पैदा होता है. ये क्या है, 2-3 चीजें पेरिफेरिक हैं, 2, 4, 5 साल में ठीक हो जाती है. लेकिन अगर पूछ लिया गया, आपने बता दिया, तो आपकी कहते हैं आंसर में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है. योर आंसर इज इम्प्रूव वर्जन. यस. और बताओ भावना, नेक्स्ट. सर, today's newspaper. हाँ, which newspaper? Sir, Indian Express. चलो. In everywhere it is only about the Monetary Policy Committee.
and जरा the इसी को increase discuss in कर- repo rate. by- इसी को स्टार्ट करो. जस्ट ये आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है. इट्स नॉट न्यू टॉपिक. Just try to deliberate it. How you can deliberate? You start from the point why Monetary Policy Committee always considered the repo rate. Just start from this. Akash, आप start करो. Why Monetary Policy Committee? Because it is the discussion is going on last 2.5 years. कि Monetary Policy Committee हमेशा इस repo rate पे क्यों काम करती? Why? What is the reason? Akash? Yes, sir. Because it is legally mandated by the government to the RBI that why you start this? Why legally mandate? Talk like the economist. RBI अगर कोई एक्शन लेती है तो इसे नहीं देती कि लीगल मैंडेट है, because it's suiting to the economy some way. It is working for the inflation. So why you are going the compulsory? As we start with the legal mandate, the reason you are what trying to say कि legally mandate से कम कोई legal mandate नहीं है. It's the RBI's discretion. RBI ने एक बैंड दिया है कि हमारा बैंड इन्फ्लेशन का ही होना चाहिए, उसके लिए काम करती है. तो there's no legal mandate. Don't start an answer where you can caught up. यही आपको पकड़ देगा इंटरव्यू में. What is legal mandate? फिर आप मेन पार्ट से हट के आप इसी में लग गए हो आप. Yes. Revise answer. फिर शुरू करो. Sir, as inflation is impacting negatively to the consumption pattern as well as economic growth, so RBI focusing on balancing the inflation with the demand. So RBI used the tool called repo rate. So it manage the money supply in the market, and it can manage the demand and supply. In demand in the markets. भावना. Sir, main reason for RBI. Yes, sir. हाँ बोलो, सुन रहा हूँ. Sir, आवाज आ रही है. am I audible? Yes, you are audible. बस आप वीडियो ऑफ रखो अपना. Yes, sir. Sir, RBI in fact uses the repo rate because it is it will help to nudge the interest rate which RBI is offering to the bank. So it is one of the policy tools which will help in furthering the cash flow and its changes in the economy. And it will also have an impact on the bank's interest and lending rates. So that is one of the main reason why RBI uses the repo rate. इसको फिर से बोलो, again repeat. फिर से बोलो. The repo rate is the policy rate of RBI. So depending upon the prevailing inflation conditions in the economy, RBI uses repo rate as a tool to nudge the interest rate of its lending to its banks. But by doing that, it can influence the cash flow in the economy. Why the RBI is increasing the repo rate when it is being said that the 2023-24 inflation is expected to why? Sir, Newspaper में है ये. RBI is, yes sir. Just recollect. Just try to recollect. ये सवाल आने के chances हैं. Sir, RBI is still concerned about the containing inflation because inflation has moderated and it is reduced. It is still forecasted for the next year that it might be around 5%, and the core inflation might continue to remain sticky. So that is the reason RBI is still following a hawkish repo rate policy. One point you are missing: geopolitical tension. लिखो आप, geopolitical tension, global financial volatility, rising non-oil commodity prices,
and volatile crude oil prices. And at the same time, economic activity in India is expected to hold up well. सेकंड पार्ट आपने बोला कि कोर का इशू है, तो वही अब देखो क्या आंसर कैसे हुआ कि जबकि कहा जा रहा है ईजिंग आउट हो रहा है, यू कैन से इट इज आल्सो प्रिकॉशनरी मेजर, आगे भी कह सकते हो, बिकॉज दीज आर द सिचुएशंस आर स्टिल एग्जिस्टिंग and the outcome of these situations will impact our economic activity. Sure, बताओ आप क्या बोलोगे? Sure. Fine, sir. I think most of the things have been said, sir, and some terms should be included in your answer. That is my suggestion. Number one, when you talk about repo rate, then you must, or MPC, and the first thing that you should say is liquidity adjustment facility. LAF is the facility for which repo rate is adjusted time and again. Okay. You should also tell them that there are two tools in the hands of a state to affect what you say macroeconomic criteria. Number one, fiscal policy. Number two, monetary policy. Fiscal policy nudge happens only once in the year, if you understand. It will be through budget and at the time of the Finance Act and all. But monetary policy has to deal with things which are more dynamic. That is why it is necessary and logical that monetary policy tool should be exercised as and when necessary. That's why there should be at least some regulatory framework. That is why Monetary Policy Committee has been created, which has to meet at least 4 times in a year, isn't it? So, ये सब चीज पूरा बताइए ना, macro से you should introduce the entire concept like this. आप जरा खोलो भावना बिजनेस स्टैंडर्ड जो मैंने भेजा हुआ आर्टिकल आपको. Yes, sir. रिटेनिंग पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी मिला? The biggest reason for this Yes, sir. is that central bank intends to keep its option open. It is still not comfortable with the level of inflation. The inflation rate based on the consumer price index came below the upper end of the tolerable in November and December, largely because of a sharp decline in vegetable prices. Core inflation continues to remain sticky and above the upper end of tolerance. You argue from here कि जो हमारा डाउन हुआ है उसमें हमारे वेजिटेबल प्राइस का इशू था, और जो कोर इन्फ्लेशन है it is a more clear picture of the economy than the headline inflation. What is issue? Yes, sir. तो कोर इन्फ्लेशन जो हमारा चिंता का विषय है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया. क्लियर? तो एमपीसी अपने ऑप्शन ऊपर लिखा है कि it may want to pause for a while to see how the cumulative rate increase in the current cycle influence. मेरे ख्याल से इतनी में आपका काम हो जाएगा. You don't need to know more than this. Even you are knowing more than that. Just we want to क्या ना, ये सब सवाल ऐसे हैं जो आपकी अंडर, जैसे शौर्य ने कहा था कि आप इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी दो पे आप अच्छा काम करोगे, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी बहुत अच्छा देता है ये, इसलिए इन दोनों हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं. कोई कंफ्यूजन? आकाश बोलो आप, कोई कंफ्यूजन? नो सर. बोलो नेक्स्ट भावना. क्लियर हुआ भावना? आकाश क्लियर नहीं हुआ? यस सर. यस सर. आज सौर की मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं भी चाय कॉफी पी रहा हूँ. सर क्या मैं ऑफिस से क्लास करता हूँ ना, तो अपने को क्या है, शाम भूख लग जाती है. बताओ. आप बताओ, तुम शुरू करो, आकाश तक आ जाएगी भावना. कुछ पढ़ा आपने और? Yes sir. In today's newspaper, most of articles was based on monetary policy committee, sir. Okay.
So there is one article on growth budget and macro balances. In the business standard, Yes, sir. बताओ उसमें. Sir, in that I could not completely understand, but what I understood was that there could be more more fiscal consolidation could have been. ये And this, ये कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आप इनका लास्ट का 2 पैराग्राफ देखो, ये काफी बातें अपने कह गए हैं कि हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वीक क्यों है. उसका रीजन दिया है राइजिंग टैरिफ. मिला आपको? yes, sir. और ये कहना क्या चाह रहे हैं कि बजट वुड अनाउंस वाइड रेंजिंग रिडक्शन इन टैरिफ्स, खासकर इनपुट्स में और इंटरमीडिएट्स में. तो एक तरह से ये बजट को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो बोल रहे हैं कि आपने अगर इनपुट में और इंटरमीडिएट्स में अगर टैरिफ कम करेंगे तो हमारा प्रमोट होगा मैन्युफैक्चर और हम कंपटीटिवनेस होंगे. एक्सपोर्ट का हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन में ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा. ये कहना चाह रहे हैं. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. The crux of the article is this only. और कौन सा दिया था बताओ? Sir, other than that, there's another article on Indian Express. बताओ Which कौन सा है? Indo-US technology cooperation. किस पेज पे है ये? So page number 13. ये जो एक्सप्लेन कॉलम में है, रीडिंग आरबीआई पॉलिसी रिव्यू, आप पढ़ा है इसको? Yes, sir. बहुत अच्छा लिखा गया है. Yes, sir. आकाश आप भी पढ़ लेना इसको. Yes, sir. याद करके. उन्होंने काफी जो एक्सप्लेन पेज होता है एक्सप्रेस का, मैं उसको बेस्ट मानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो. अब बताओ भावना क्या है उसमें? Sir, in this, he has spoken about the relation between India and US and the technology transfer that India has repeatedly asked US, but we have not been very successful in getting the technology transfer. Why not successful? Sir, there has been agreements wherein we are mainly focused only on trade aspects, and we have not pushed for technology transfer aspects. So we are focusing more on import and export only. यह एक तरह की स्ट्रेटजी है अमेरिका की. देखिए, कोई आदमी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा, आप अपना मैन्युफैक्चर करोगे तो उसका ट्रेड इंपैक्ट होगा. तो जो अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ट्रेड, वो लोग ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं, टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे हैं. अब ये करें, अगर आप रशिया से अमेरिकन हार्डवेयर में आप शिफ्ट कर गए तो आपने एक जगह से दूसरे जगह गए, कोई फायदा नहीं हुआ. तो जो आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? हाउ यू विल हैव द आत्मनिर्भर भारत इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट? just concentrate on this part, just come on that. कम दो. एक ये जो आर्टिकल है प्रॉब्लम रेज कर दे रहा है. प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका ट्रेड ज्यादा करना चाहता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कम करना चाहता है. अभी तक हम ज्यादातर परचेज करते थे फ्रॉम रशिया. इफ आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम रशिया टू अमेरिका एंड डूइंग द सेम थिंग, ट्रेडिंग द इक्विपमेंट्स, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है. तो फायदा कैसे होगा? कम ऑन द सॉल्यूशन पार्ट. दिस इज योर इंटरव्यू. बताओ. आकाश आप बताओ. Sir, we have to focus on nudging US to transfer technology. And we have to focus on this aspect, that how we can create win-win condition. As there is a issue like climate change and with regard to defense, the rising of China. So we can explain our terms, like in that sense, that how the security of
European countries as well as Asian countries is depend on this transformation of technology. In that way, sir, we can basically try to reach at some agreement where US genuinely transfer some technology, and as happening occurs like US is ready to transfer nuclear based submarine technology to Australia, but so we have to focus on that aspect, how China's policy is hampering negatively to the US interest, and in that sense maybe we can get some benefit out of the. Bhavna, are you listening? Yes, sir. Come dissect this issue. What know-how is being supplied? Only methods and procedure of assembly and reassembly. You stress on this part. It Yes, is sir. a factually correct statement. कि जो हमको यही राजा रमन के आर्टिकल में राजा रमन को यही यहाँ भी कहा जा रहा है, यही हकीकत भी है कि जो हम नो हाउ एक्वायर करते हैं वो प्रोसीजर फॉर असेंबली और बिल्डिंग एयरक्राफ्ट, जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो ये नहीं जान पाते कि प्रिंसिपल्स क्या है, लॉस क्या है बनाने का। एक सिस्टम बना के दिया गया, आप असेंबली करो, रीअसेंबली करो। और इंडिया जो एक लार्जर इंपोर्टर बना रहता है, आप असेंबली कर लेते हो लेकिन आप उनका नो हाउ थोड़ी पाते हो, आप उनके मटेरियल आप यहाँ लाते हो, आप उसको फिर असेंबली करते हो। और इंडिया इस समय टेक्नोलॉजी के नीड में है, इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए। यूएस जो इंडस्ट्री है वह इस बात पे फर्म है कि आई विल ट्राई, यू विल ओनली ट्रेड, I will give you the right to reassemble. You can assemble it, but material हम ही सप्लाई करेंगे। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम अमेरिका के पास जा रहे हैं रूस को छोड़ के, तो our agreement will be in a way कि हमको आप नो हाउ दो, टेक्नोलॉजी दो। सर बताओ आप और कुछ। सर प्रिंसिपल वाले पार्ट पे तो ज्यादा नहीं है मेरा इनपुट, लेकिन ये है कि ये जो प्रोसेस है, in processes related there are certain terms that you should know, especially with respect to the market for vehicles and all. You should know. Sometimes it happens कि आप ऐसा बोल रहे हैं और उसी में some panel member will get clicked. इससे पूछते हैं okay, what is it called when you only get to assemble the components? What is this process called? इस process को इसको क्या बोलते हैं? You import the components from somewhere else and then assemble it here. So this is called CKD method, completely knockdown method. As against पूरा का पूरा machine वैसे का वैसा import करो, that is called CPU, completely built. So these are import terminologies, import methods that we use. Okay, CPU क्या होता है? And then there is in between the two semi knockdown STD. तो ये कहीं नहीं पूछ ले कोई, इसलिए जनरल नॉलेज की बात है। फॉर एग्जांपल उस दिन हमने मॉक के समय वी वर आस्किंग भावना, आई थिंक दैट हैव यू हर्ड अबाउट 5-star सेफ्टी रेटिंग ऑफ व्हीकल्स? यस सर। शी सेड कि शी हैज नो क्लू। तो ये जीके वाली चीजों में वी कैन नॉट अफोर्ड नो, तो थोड़ा सा जानना चाहिए। वी शुड नो दैट यस देयर इज अ 5-star 3-star सेफ्टी रेटिंग ऑफ व्हीकल्स। सिमिलरली दिस एस्पेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमनली टॉक्ड अबाउट CKD, SKD and CBU. These things you may know. और बताओ नेक्स्ट वन। Sir, in that only there's an important article on counting her work by Vivek Debroy. Counting Her work. हाँ, yes. So this is very nice. Yes. दीपक जो क्या है ना, कई लोग अच्छा लिखते हैं, जैसे मैंने राजा मोहन का नाम लिया, अशोक गुलाटी का लिया, उसी में ये मिस्टर डेब्रॉय भी है। आप 3-4-5 राइटर का नाम लिखिए, उसको हमेशा पढ़ा करिए। ये लोग हमेशा क्वालिटी लिखते हैं, जब भी लिखते हैं कहते हैं मिस्टर ओब्राय, डेब्रॉय हमेशा अच्छा लिखते हैं। हाँ, चलो बताओ। Sir, in this he points out to major issues in the way the survey is done to calculate the periodic labor force participation in the country. So what he says is that especially with respect to women, there has been no proper segmentation of the work.
Like for example, if a woman is doing her household work, then she comes under activity code 93 and she falls out of the labor force. But we can have it properly categorized, wherein even her contribution to the domestic work can be included as a part of her work to the economy. So this categorization should be done. And once we achieve that, we can have a higher labor force participation rate, especially for women. So currently it is around 31%. So if we do these kind of categorization in the survey, we can achieve at least around 45 to 58 participation of 56% in India. This can be achieved if we properly segregate the survey and how we take the inputs. So this is the crux of the article. भावना कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस तरह से वुमेन का लेबर फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं वह सिस्टम फॉल्टी है। यस सर। ये दो तरह की चीज है। एक क्या है कि हम लोग शायद लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जो औरत घर में रह के घर चलाती है और उसके कारण पति बाहर काम करता है तो शी शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज वर्किंग फोर्स। सेकेंड, ही इज सेइंग दैट कि आप कहां करते हो, आप कैलकुलेट करते हो इंटरप्राइज में, हाउस होल्ड सर्वे नहीं करते। तो हर आदमी तो इंटरप्राइज में काम नहीं करता है। तो ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वह वुमेन्स पार्टिसिपेशन की क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है। और जब क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है तो हम एक बेहतर पॉलिसी नहीं बना पाते। If I try to understand his argument or his narrations, तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी और बेहतर हो सकती है अगर हमको लेबर फोर्स का रियल डेटा मिल जाए। नाउ कम ऑन द सिचुएशन कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ऐसा हमको सर्वे कर देना चाहिए, उससे आप क्या पॉलिसी बनाओगे? कम ऑन दिस पार्ट, पॉलिसी में फर्क क्या आएगा? Sir, I'm sorry, sir, I did not understand the question. What he's saying that the method of the collecting the data of the women labor force is not correct. Yes, sir. There is two issues you're missing. Issue A, that the woman who is working in a household supporting the family and the male member is earning outside, she is not counted despite that she is contributory to the workforce. Yes, sir. B, you are collecting data only at the enterprises, not through household surveys. By these two calculations you are doing, what does mean कि इसका मतलब क्या है? पॉलिसी नहीं बन सकती अच्छी unless you have the exact data. Suppose you are able to have these data, then what better policy you will project? You got the question? Yes, sir. बताओ. Sir, one thing is we will have accurate data on the contribution of women to the economy as a whole. And then another aspect is we can perhaps formulate more schemes or more employment for women in their areas of specialization. If they are willing to work and if they are able to take out time, then this can also be done. So I think these two aspects we can get with the data what we will collect. आप बताओ आकाश. Sir, बताओ. apart from policy angle, I am able to analyze that when the economic contribution of women will be recognized, then the overall perspective towards the seeing the work will be changed. Like as of now, we are just thinking that the work of women is not considered as a productive work. So it in women psychologically they will feel some sense of achievement that they are also contributing in the economy, as well as the other participants of the society will also see the way like domestic work or like the women are helping in farming activity or poultry or other economic activity. They are not like considered as a
productive task. So that will primarily change. So it will increase the confidence of women, and definitely due to the proper data, we can target the proper schemes to reskilling the labor force with regard to women, like particularly in poultry or farming, etc. Bhavna, if you read the last part of this article, they are giving a very interesting observation that India's grading in the international level is suffering because you have not a good data. आप देखा था उसको? Yes, sir. ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका जो बोल रहा है वुमेन्स जो फीमेल LFPR 56.4% है और आप बोल रहे हो 31.2% फॉर 2012। तो इसके कारण क्या है कि आपका जो सर्वे है वही खराब है, उसके कारण आपकी जो रैंकिंग है वह वर्ल्ड में ठीक नहीं होती है। अगर आपका अपना स्टैटिस्टिक्स ही ठीक नहीं है तो आप कैसे ग्लोबल रैंकिंग में आप ब्लेम कर सकते हो? तो जो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपके पास डेटा ही ठीक, तो देयर इज टू फ्रंट। वन, your policy cannot be good unless until you have good data. Second, your ranking in the international level will suffer, and your ranking decides so many things for your country. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आप यही मिस्टेक है, तो सरकार उस डेटा को ठीक करे। अगर ये सवाल आता है कि FLFPR के अच्छे खराब होने से क्या फर्क पड़ता है, बोलो कि सर हम पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं, दूसरा हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग भी हमारी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन पुअर इंटरनेशनल रैंकिंग बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट एग्जैक्ट डेटा। तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है MOSPI, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, वह इसको देखे और इंफीरियर डेटा को ठीक करे। सर जोड़ो कुछ इसमें, तो लगाओ इसमें एनालिसिस। Yes, sir. There will be one aspect which is very necessary when at this juncture, when our economy is growing now. What is happening as India is poised to become an economic superpower, then there is a trend to highlight the faults more than earlier times. This is the truth. I mean, this is not something controversial that you are saying. There is a tendency to highlight the problems, the faults and deficiencies and economy in a social structure that is rising up the ladder. It happens. Globally, it happens with everybody. So critics will attack you. So one thing is called self-image. So if we have inclusion of this particular sector of women into labor force, then that will add to the self-image of the woman, number one. Number two, the global image of the country as a society. And that is very necessary. Again and again, India has been at the forefront of receiving criticism with respect to certain areas. Participation of women and the status of women, that is one of those criteria for which India has been criticized heavily all over the global fora, always. And more now, because we are now rising up the ladder, so we have to showcase ourselves that it is a data error rather than a correct reflection of the status of the women. Number three, what policy? Suppose, nothing more, but suppose you announce that this particular seminar or this particular webinar or this particular mela is for women who are participating in labor force. So once you create a class that women labor के लिए ये facility दे रहे हैं, या for this incentive, suppose you introduce an incentive for them, not necessarily monetary incentive, some other indirect incentive for them, some privilege for them. For example, बहुत छोटा सा example है, practical, theoretical example है. Suppose you say that women who are a part of the labor force, they will be given so much of concession while they travel in the road transport corporation buses. Suppose this is the case. Then you understand my point. Once you create a class and you have authentic data for that, then government has a robust and reliable data to introduce any scheme for them. Even those who are helping their husbands in their domestic and household through their household chores, they can also later on be included in a particular social program of the government. But so long as they're completely out, there is no possibility of including them somewhere. So when you talk about inclusive development, you must create a class which is comprehensive. And for creating a comprehensive class, these women should also be a part of the labor force.
So domestically, for policy perspective, it is necessary. For the women themselves, it is necessary. And for India's global image, it is necessary. Sir, can we say that this can be included to improve our ranking in global gender gap index? Because right now we are at rank of 135. So if we have proper statistics for counting the labor force participation, so we can perhaps improve our ranking. Provided that, see, I'm not sure, you will tell me. Provided that this labor force participation is one of the criteria for giving that ranking. If it is, I think it is. So yes, of course. That is the global image we are talking about. These are the ingredients of the global image of the country that we are talking about. Sir, I have one doubt, sir. Yeah, जरूर पूछो. Sir, when we say that the contribution of women in the domestic sphere, like the work done by women in domestic level, should be considered in the economic sense, then is it not, sir, like it is like division of labor based on gender, like gender role, and that kind of counter question can be asked me as I am sociology students. Like, And there's nothing wrong in that. There's nothing wrong. Positive discrimination is the soul of the constitution. उसमें तो कुछ गड़बड़ ही नहीं है. And there is no discrimination as yet. We are just identifying their contribution. That is all. Discrimination is not yet happening, positive or negative, neither. We are just creating a class, recognizing that they exist as a class. yes, yes. Sir? And another question with respect to the same, when we say that we need to create more jobs in pink sectors to absorb women, so will it not be like that we would be restricting women or in fact stereotyping them with working in certain jobs like teaching, nursing, or like these kind of jobs? Where it is being said you are restricting them, it is creating more job in this field. It does not mean you don't create other field in the job. These are more suiting for the girls. You try to understand the society which you have in the village, in the rural areas. These jobs are more suiting to the girls. अब आप बोलो स्टिचिंग में हम ज्यादा गर्ल्स को करेंगे, हम स्टिचिंग ज्यादा यूज करेंगे, मधुमक्खी पालन में यूज करेंगे, तो इसमें तो कोई पिंक जॉब नहीं हुआ ना. ये तो आप यू कैन क्रिएट मोर जॉब्स, यू कैन गिव मोर स्किल. मान लो आप ये एक अभियान चलाओ कि हम महिलाओं को स्टिचिंग में हम ट्रेन करेंगे, उसमें हमको मिलेगा, इसका स्कोप भी है, बिकॉज टेक्सटाइल इज वन ऑफ आवर कोर प्रोडक्ट. तो वेयर वी आर सेइंग दैट वी आर मेकिंग दिस स्टीरियोटाइप. बताओ मेरे को. यू कैन आंसर इट कि सर हमने आर्मी भी खोल दिया, एनडीए में शायद पहला बैच लड़कियों का जा चुका है. One of the general has said one day you see somebody is sitting in my chair. The women has gone to the right now they are the pilot, everywhere is there. If anyone wants to accept the challenging job, it's available. Soldier हो रही है, कब महिलाएं, everything is there. आप देखो अभी हाल में क्या पहली महिला डीजीपी हुई है, इलाहाबाद की लड़की है वहां पे पंजाब में. So you cannot say by creating the pink job you are trying to regulate them or trying to avoid them to take part in the core areas. ऐसा तो नहीं कहा जा रहा ना. अब बताओ. Yes sir. भावना कम आ गया. जिसमें आप कन्विंस हो गए वही अच्छा आंसर है. हाँ, yes sir, yeah. Bhavna, please ask again. We will try again. If you are not satisfied, then you need to get your reversal here only. Yes sir. बोलो. Sir, certain sectors like stitching, nursing, or teaching, these, in fact, only in these professions we find more number of women working. So won't it be like kind of stereotyping women with certain kind of jobs, that they are suited only for these soft jobs or for these pink jobs? The answer to this, we can, other than sir has already elaborated, but let's attack it from a different perspective. You say that yes, the stereotyping itself is bad, not that the women are working in those sectors. That's not bad. Stereotyping is bad. Yes, sir. Make it very academic and very precise. Stereotyping is bad. If there is a natural tendency of certain women, natural tendency of a particular gender to work in a particular field, that itself is not bad. That's a natural process, natural phenomenon. Stereotyping it is bad. So जो part bad है बस उतने पे रहने.
there is nothing wrong. Sir, I have one question. Yeah. Sir, there was one study conducted by Margaret Mead, which is like one sociologist, and he concluded that the division of labor is the social construct and not a natural phenomenon. Like it is learned by socialization, like from the childhood itself, like family and other part of society indicate the what like expected role of the gender, like a girl child or boy child. So like in that sense, like if they ask me in that sense, then how can I? See, the bottom line of this entire argument, gender bias and all, is this. Number one, removing gender bias does not mean removing the differences in the gender. Remember this always with conviction. No, we are not there to undo what nature has done. That's not the policy. That's not the thought process that will bring any laurels to our policy. Okay. Removing gaps in gender is not the same as removing differences in gender. The gender will remain there. Let there be. What is not acceptable is discrimination on the basis of these differences. Be very clear about it. We don't discriminate against or for somebody just because of one's gender. That is the only thing that is necessary. The differences which occur naturally, they are a part of the natural process. They are a part of the society, and they should be appreciated. These differences are what make a society. Okay, that's fine. Do not argue for reducing the differences. No, we cannot. Of course, we should not do. The only thing that is required, you do not judge somebody because of the gender. That's all. जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जितना मैंडेट दिया हुआ है, whatever mandate is there constitution or fundamental rights, this and that, they should have no discrimination, at least no negative discrimination on the basis of somebody's gender. Positive होना हो, no problem. Bhavna, if you read the constitution 15(3) and 16(3, आप लिख लो, आपको बात पढ़ना 15(3) and 16(3. Yes, sir. They are saying that make special provision for women and children. It has been argued in the court that is it discrimination or no? Without 15(3), 16(3, the section is not complete. Section is not complete. It Yes, is sir. not a discretion. It is the encouragement. Without applying or using 15(3), 16(3, the main prohibition of discrimination you cannot address. Try to understand this. Listen again carefully. Yes, sir. The subsection 3 is saying that you can make a special provision for women and children. Got it? Yes, Main sir. provision is saying that prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex. This 3 is not against one, but supporting to one. Because until you encourage them, you cannot finish this discrimination. If you are getting the point to argue, you argue this. If suppose the short जिस तरह आप इंटरव्यू हैंडल कर रहे हैं, अगर आपको पॉइंट मिलता है, you add this. It is not my opinion. It's going of the Supreme Court. Yes, sir. That you cannot do. You have to do this. अगर आपने ये किसी तरह से कह दिया ना, आपकी बड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन का ये लॉन्ग डिबेट के बाद आई है. Yes, come next. हो गया कुछ है ना उसमें? So that's it, sir. और कुछ है? कोई आर्टिकल है और? नहीं sir, आज everything was there on monetary policy only, sir. We will discuss once more monetary policy. I am expecting this question from the Akash, because Akash is going to give interview very soon. One day we will again discuss the monetary policy. और भावना कल के न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल अच्छे हैं. We again take 1 and 2 आर्टिकल. क्या है? एक दिन में अगर 4-5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेते हो तो you lost sight. तो हम लोग कल फिर लेंगे. Yes, sir. ओके, आज बड़ा अच्छा रहा डिस्कशन. एवरीडे अच्छा ही होता है. पता नहीं आप लोग कितना सीखते हो, तो रोज सीख के जाता हूँ. मुझे लगता है यार आज की भावना और आकाश मेड अस वाइज. Thank you so much, sir. यशु रुस्तगी से मैंने कल 3-4 सवाल किए हैं, मैं उसको फिर लाता हूँ. वो उसने बड़े अच्छे आंसर दिए. एक आंसर की वो लड़की कंप्यूटर इंजीनियर है क्या, वो भी बोलती सर मुझको आता नहीं है.
इसलिए वो आती नहीं। सो मैंने कई बार कहा, बोलती सर हमको तो आता नहीं, मैं क्या करूं। 2012 बैच की लड़की, बहुत अच्छे आंसर दिए उसने, वो कंप्यूटर इंजीनियर है लड़की, तो वो क्यों आईएएस बनना चाहती है, वेरी गुड आंसर। दूसरा उसने एक आंसर दिया था कि जो किसने किया था, ये आकाश ने किया था, मेमोरेबल या क्या था, मेमोरेबल मोमेंट्स, क्या था शब्द, क्या था। Yes, sir. Memorable. तो उसको मैं किसी दिन लाता हूँ, क्या है वो पेपर नहीं पढ़ती, आई वांट टू ब्रिंग हर ओनली बिकॉज ऑन द जनरल क्वेश्चंस। एक दिन उसको लेके आते हैं, तो उस दिन उसका सेशन कराते हैं, उसके आइडिया सुनो, उसका आइडिया अच्छे हैं, और क्या 10-12 साल लग गया है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिफरेंट काम भी किया है, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीपीओ, राइट नाउ शी आल्सो वर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सूडा। तो उसको भी हम लोग सुनते हैं तो वो क्या बोलती है वो, तो कल परसों उसको समझा, उसको भी बड़ा पूछता रहे हैं, जब बोलते भाई नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, बट आई विल ब्रिंग। Sir, हाँ बोलो। sir, I बोलो thought बेटा। of sir, I thought of going for a trip somewhere for 2-3 days and then going back. यस यस यस, कहाँ जाना चाहते हो, जरूर जाओ, कुछ हेल्प चाहिए बताओ, हम हैं, 100 रहे आप कहीं जाना, तो इंतजाम भी कर देते हैं आपका। कहाँ जाना चाहती हो, कहाँ जाना चाहते हो, I will join back. कहाँ जाना चाहते हो। Now I'm thinking of any. I'll go back home tomorrow and then अच्छा, sir, I have not planned anything, sir. Right Okay. now, I thought I will just go back. Then I thought, and then on the way I'll go to Chola. भावना क्या है ना, आप है 1-2 दिन का क्लास हम ऑफ कर देते हैं, यू गो एंजॉय, हम आकाश का क्लास 1-2 दिन कर देंगे, ठीक है ना। अगर लगता है आपको, Yes. यू कैन गो, नो इशू, क्योंकि आपका बहुत लंबा चल रहा है। Yes, sir. सॉरी क्या थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे, भावना का इंटरव्यू नहीं आया है, 21 अप्रैल तक की डेट डिसाइड हो गई है, एंड शी इज स्टिल नॉट इन द स्लॉट, तो शी हैज स्टिल 2.5 months टू गो, और जो ट्रेनिंग है बहुत रिगरस ट्रेनिंग है, तो थोड़ा से कुछ गैप कर देते हैं तो भी थोड़ा से रिलीफ मिल जाएगी। आकाश की आ गई सर। आकाश को तो है Sir, 21st Feb है सर। हाँ, तो हम लोग क्या करें, आकाश का ही 4-5 दिन लगातार कुछ कर देते हैं, ठीक, भावना ले लो। तो आकाश क्या है, जैसे भावना पेपर पढ़ती है, आप पेपर पढ़ना शुरू करो, तो आपका 21 तारीख का आपका हम तब तक करा देते हैं, Yes. ठीक भावना, ओके बाय। Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.